This करते हैं वही conference लूंगा। will now be recorded. हाँ जी बताइए। तो आप मुझे सुन पा रहे हो? Are you able to हाँ जी hear हाँ me? जी Hello? हाँ जी हाँ जी, यस 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 यस। Hello? हेलो। Okay. Yeah. यस 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 यस। ये my voice is coming? Just now I heard that. That's it. Yes. Before that I... So yeah, what are the doubts? Firstly, we will discuss doubt today, or we will discuss doubt. Can we do test cases in detail, like how to write in a format, how to write test scenario, the steps, the positive, negative, and then test case Like description? the format I have shared with you. Just a moment. Yeah, I saw that, but I want us to do it together. I really want to understand like how we think and how we do it, because I was able to make it scenarios, but I was not able to do the steps. Just a moment. This is the proper format. Let me show. For example, let me show. For example, there is a test case, right? There is a test case to check the login functionality. That is a scenario, right? To check the login functionality. This is a test scenario, right? Now, what are the test cases? To check login functionality with Valid credentials. So what will be the test case for this? Let me show. You can see. First one, the test case ID. This is the test case ID. Right now, version written by module submodule. AMS is the module, and what is the submodule in that? Login. So means AMS is the application name. Yes, exactly. AMS is the application name. Next one, precondition. What is the precondition for the test case? What we need to run the test case. This Yeah. What is the prerequisite? It's same, isn't it? Yeah, like if you prerequisite or precondition, both are same thing, na? Yeah. Right. Next one. What is the prerequisite here? So login page should be displayed. Yes. Next one. Test case description. Now, test case description and test steps, are they same? Both are different. Description means one-liner form, we can say. Or we can say objective of the test case we will mention here. So what is the difference between test case description and test scenario? Test scenario, this is a scenario. Now test case is like, this is test case. Both are different now. राइट यहाँ पे आप एक चीज देखो कि एक ये सिनेरियो है, अब इस सिनेरियो का एक केस ये बनेगा और दूसरा केस क्या बनेगा? With invalid username and password. Yes. ये आपका पहला टेस्ट केस हुआ, ये आपका दूसरा टेस्ट केस हुआ। और हर टेस्ट केस के लिए अलग-अलग स्टेप्स हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। So can we do can you help me right now with the test cases that let's put test scenarios and test cases in a format for lift or water bottle, whatever. एक बार आपने ट्राई, एक्चुअली देखो ट्राई खुद से करोगे तभी आइडिया लगेगा। मैं एक बार आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। आपने मेरा वाला देखा? Did you see mine? मैं एक्चुअली नहीं देख पाया, मैं ना ऑफिस के कामों में स्टक था,
एक मिनट रुको, TC1 वर्जन कुछ भी दे सकते हो, रिटर्न बाय शेफाली। नाउ मॉड्यूल स्लैश buttons, precondition, So I have a question here now. So lift is like a hardware, right? But we have to this is a check the module, software. module, this is a module and sub module buttons. Like in the lift we have a number of modules inside a lift, like button, a number of modules we can check, we can identify. So when I was like reading on the internet about it, so they have written like check the specification of the lift, length, breadth, width, and all. So do we have to, as a software tester, do we have to do that? Yes. Hold Okay. on, let's just a moment. I'm covering test case description. Now buttons to verify the functionality of buttons in the lift, right? Now input data, nothing, or we can say button number, that can be input data. Steps, press the button, ठीक है. Now expected result, closed. Now it's clear. Yeah. Button number, or we can say right close button, we can say. This is for first test case, we can say. Now second test case, verify the close button. I was expecting something like that. Mm-hmm. Verify the functionality of navigation button in the lift, right? Mm-hmm. Step, now go inside the lift, press the button for closing the lift. Now third step, Press the button. press the button for floor number 3, for example. Check, expecting the lift should go up, right? Yes, Mm. something like that. Right now it's clear. Yeah. Any other support? As today I will discuss only these test cases. I will not move to the further, because test case is the most important activity. Yeah, even I want to get hold Yes, on it before moving ahead. exactly. If we have to give some more time for writing test cases, then it's not a problem. We can give time today. Mm-hmm. Okay. Uh,
Okay. When I was studying on the Google, I saw like people are explaining it in the form like UI test cases, then positive test cases, then negative test Yes, cases. Do we have to do like that, or this is fine? exactly. Exactly, we have to take care of each area, like functionality wise or non-functionality wise. As I told you in the session as well, we should cover both the aspect, like functional side and non-functional side. So it covers all that UI design Oh, level, yes, everything, right? yes, everything we should cover, right? Do we have to mention in the test case No, document that we or this is UI test yeah, cases, this is no, performance? no, you can something module, some module you can mention here, like uh, 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 precondition. Lift should be not in the running state. Lift should be, we can say, should be ready or developed, we can say. Right now, verify the height, width, color, right? These So are the things you are saying. we are not writing test scenarios here, right? No, 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 no. Like scenario, there is a single scenario to check the UI, to check the to check the things from the UI perspective. This is a single scenario. Now it is consist of multiple test cases, Mm-hmm. right? Height, width, color, weight, capacity, right? Yeah. Input data, expected color, weight, capacity. These are the Input data. input data. Now ch- check the width of the lift. First step. Second step, check the height of the lift. Check the capacity of the lift. Right now you can mention all these things. Now you can mention here height, width, capacity, and color must be as per the specification, Okay. as per the requirement, we can say something like that. Now it's clear. Yeah. Any other doubt? हाँ जी, कुछ और डाउट? नहीं. नहीं. ठीक है, तो ये टेस्ट केसेस हमारे को जरूर करने हैं। कुछ कुछ भी Mm-hmm. डाउट है आप मेरे से क्लियर करो, बट ये टेस्ट केसेस सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। बट Mm-hmm. हमारे को ना देखो इन चीजों का टेक केयर करना है। हमारे को ये नाम है ना, जो ये नाम का टेक केयर Mm-hmm. करना है, किस किस एट्रीब्यूट का, किस फील्ड का क्या पर्पस है। Mm-hmm. So what was happening actually, Deepak, when I was trying to write the cases, uh, हम्म। no, I had a mindset of writing user stories and all. So I was trying. नो I नो। was writing like user is able to do that, user is able to do that. Then I have to go back. So it was really हम्म overwhelming me. So yeah. हम्म। तो आपको बस ऐसे ऐसे टेस्ट केस लिखने हैं।
गॉट इट नाउ। इवन जो ना देखो जीरा होता है ना, जीरा के अंदर का मैं आपको बताता हूँ। जीरा के अंदर जो रहता है वो कैसे रहता है टेस्ट केस। सबसे पहले वहां पे रहता है डिस्क्रिप्शन। मैं आपको पूरा एग्जैक्ट फील्ड बता देता हूँ जीरा के अंदर भी जी कैसे लिखते हैं। हाँ, एक जी, मिनट रुको, एक मिनट रुकना बस। कोई बात। मैं एक बार दूसरा लैपटॉप ऑन कर लूँ। हाँ जी, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन रहता है, ठीक है, वहां पे टेस्ट स्टेप रहता है, और उसके बाद आपका टेस्ट डेटा, ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एंड सेकंड वन इज एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका जीरा के अंदर रहता है। जीरा के अंदर और सिंपल फॉर्मेट है बस। I have seen acceptance criteria also. Sometimes BA write those. Does QA write acceptance criteria or only it's नहीं, बी ए। like Gherkin's syntax we don't have to use. Gherkins we use in the automation side. We will discuss Oh, Gherkins जो आपका यूज होता है वो ऑटोमेशन में यूज होता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, तो जीरा के अंदर आपका ऐसा रहता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आएगा? अगेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट केस। ठीक है, यहाँ पे आप टेस्ट स्टेप डालते रहोगे, टेस्ट डेटा डालोगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट। ठीक। ठीक है, इसके अलावा कुछ बटन होते हैं, जैसे अटैच करने को स्क्रीनशॉट, ठीक है, ब्लॉक या टेस्ट केस, राइट, टेस्ट केस का ब्लॉक। स्टेटस क्या है। देर आर सम अदर फील्ड्स ओके। like test case start progress. When we will start the test case, we have to click on the start progress, then complete, then done. We have to change the state of the test case in the Jira, right? If test case is blocked, there is a blocked functionality, blocked button, right? And we can attach the screenshot as well. Again, the same things whatever we are doing here in the Excel, the same we can write in the Jira as well. ठीक है, कुछ जी। डाउट इसमें? तो ये जो ब्लॉक बटन है, ये ब्लॉक मतलब इज इट सम फंक्शनैलिटी इज ब्लॉकिंग अस टू टेस्ट द टेस्ट केस Yes, और? exactly. ओके ओके। ठीक है, तो टेस्ट केस ही करो आप सबसे पहले, ये जरूरी है फिनिश करने। जी जी जी। ठीक है, ठीक है तो मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये जी। रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड करता हूँ। अच्छा, आज ठीक हम है, और नहीं करेंगे? हाँ, इतना ही करते एक बार ना, ये इस पे आपकी पकड़ बन जाए। ठीक ठीक है, है मतलब ठीक। आपका पर्सपेक्टिव से सही रहेगा वो। ठीक है, ठीक है, मैं ये आज मैं ये करो। हाँ, आप इस पे थोड़ा सा वो टाइम दो, क्योंकि टेस्ट मतलब के। जितने आपने दिए थे, आई एम हाँ नॉट हाँ, टारगेटिंग फॉर ऑल दिस थिंग्स, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जो करूँ वो परफेक्टली करूँ पहले। एक बार एग्जैक्टली। पूरा वो सेट हो जाएगा रिदम, तो मुझे लगता है बाकी सब हाँ अपने आप आ जाएगा। हाँ है हाँ ना? हाँ, और तो देखो मैं पता क्या है ना, मतलब टेस्ट मैं आपको आज इसलिए आगे मूव नहीं कर रहा, क्योंकि ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये टेस्ट केस लिखना। अगर ऑफ कोर्स। टेस्टर चाहे मैनुअल है चाहे ऑटोमेशन है, टेस्ट केस लिखने आने चाहिए जरूर। जी 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 ठीक है ना? जी। ठीक है, मतलब ये रिकॉर्डिंग आपने स्टॉप कर दी है? मैं हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट रुकना बस।